Hello students, now we are solving question number 20 of your textbook T.S. Grewal. Chapter name is Admission of a Partner. According to this question, B and C are in partnership sharing profits and losses as 3:1. They admit D as partner in the firm. D pays premium of 15,000 for 1/3 share of the profits as between themselves. B and C agree to share future profits loss equally. Draft journal entries showing appropriation of the premium money. According to this question, there are two partners B and C having ratio of 3:1. They admit D in their partnership firm for 1/3 ratio. D has to pay 15,000 rupees for premium for goodwill. One additional thing is that B and C will have future profit sharing ratio in equal. There are two partners B and C having ratio of 3:1. There is a new partner admitting in this firm for 1/3 ratio. Now we have to calculate remaining ratio. 1 minus 1/3 equals to 2/3. B new ratio. 2/3 into one information is given in this question that B and C will share future profit sharing ratio equally. B और C फ्यूचर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इट मींस जो रिमेनिंग रेशियो बचा है इसमें मैं आधा हिस्सा B को प्रोवाइड करूंगा, आधा हिस्सा C को प्रोवाइड करूंगा. The new ratio between A, B and C will be 1/3 is to 1/3 is to 1/3, that is 1:1:1. Now we have to calculate sacrificing ratio. As we all know, the formula of sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. We have to calculate sacrificing ratio for B and C, the old partners. Old ratio of B is 3/4 and new ratio of B, actually this is B is to C is to D. The new ratio of B is 1/3. LCM is 12. That is 5/12. C 1/4 minus 1/3. The LCM is 12. That is minus का 1/12. After calculating sacrificing ratio, we find out that the sacrificing ratio of B is 5/12 and the gaining ratio of C is 1/12. Now, the new partner D has to pay 15,000 rupees for his share of premium for goodwill. जनरल एंट्रीज की बात कर रहे हैं. First entry we have to pass bank account debit to premium for goodwill account. Being premium for goodwill brought by new partner. That is 15,000 rupees. Now, this premium for goodwill is to received by B because B has sacrificing ratio. C doesn't have sacrificing ratio. C has gaining ratio. We have to pay full premium for goodwill to B.
एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये क्यों किया ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। टू बी कैपिटल, being adjustment for goodwill, premium for goodwill is 15,000 rupees। जो न्यू पार्टनर डी 15,000 रुपीज की गुडविल को लेके आया था वो 15,000 रुपीज की गुडविल मैंने पूरी की पूरी लिख दी है क्योंकि वो हमें बी को देनी है। अब एक नई बात ये आती है कि सी का नेगेटिव में आया था रेशियो, इट मीन सी हैज गेनिंग रेशियो। जो पार्टनर गेनिंग रेशियो रखता है उसका ये लायबिलिटी बनती है कि वो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को जितना गेनिंग रेशियो बैठता है उतना ही हिस्सा गुडविल का देना पड़ेगा। इट मीन्स सी हैज टू पे 1/12 ऑफ फुल गुडविल टू बी बिकॉज सी हैज गेनिंग रेशियो। In this question, new partner has to bring 15,000 rupees for his share of goodwill. D की गुडविल है 15,000, टोटल गुडविल 15,000 इंटू 3 45,000। C has gaining ratio, therefore C has to pay 45,000 into 1/12। Due to gaining ratio of C, C has to pay 1/12 figure to B। न्यू पार्टनर की जो गुडविल है वो 15,000 रुपीज है। न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग इस फर्म की टोटल गुडविल न्यू पार्टनर के रेशियो को उल्टा करके इंटू करा देंगे तो वो 45,000 रुपीज है। उसके अकॉर्डिंग जो सी का गेनिंग रेशियो बैठा था 1/12, 15,000 इंटू 1/12 करा के जो हिस्सा बैठता है वो बैठता है 3750। ये हिस्सा सी द्वारा बी को और दिया जाएगा एडिशनली। इसके लिए मैं इस एंट्री में इसको लगा रहा हूं। इस हिसाब से टोटल गुडविल बैठ रही है 18,750। That's all।